चलो मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके. Let's go for directly for installation. So we will use a Next.js. So let's copy this command, create next step, and we will open our folder. Okay. So I just made a two folders. Okay. One is one will be a backend, one will be our front end. As of now, the front end is empty, and I moved all my our previous code into express code जो भी Node.js का था, इसको मैंने बैकएंड फोल्डर में मूव कर दिया. ठीक है. सेम सिमिलर आप भी कर लो. अब पूरा सारा पुराना कोड मूव इट इनटू द बैकएंड फोल्डर. अभी जो भी अभी अभी हम फ्रंट एंड जो भी करेंगे अभी फ्रंट एंड फोल्डर पे करेंगे. ठीक है. लेट्स दिस कोड. Mic off. So we will go into the CD backend and अभी इसको स्प्लिट करेंगे. ठीक है. अभी पहला फर्स्ट वी विल रन दी बैकएंड पहला रन कर लेंगे. Okay. We have moved the earlier code into a backend folder. Now we are working on the front end folder. Okay. Then अभी ये जो स्प्लिट किया है ना उसको हम फ्रंट एंड फोल्डर पे. Then we will enter a command npx create next app latest. Okay. Latest and dot because it will create app in the front end folder only. Okay. We will be not using the TypeScript, no ESLint, tailwind CSS, source directory yes, app router yes, turbopath no, and import alias yes. तो ये arrow bars है ना left and right you can switch between yes and no. Okay. Then we will also using a import alias. Okay. So it will automatically this command will automatically install the React and Next and Tailwind CSS. Okay. And also I am running backend with 3001 port. We'll run our backend in 3001 port and we will run our front end in 3000 port. So change earlier the backend was running in the 3000, so change it to 3001. Today we will build a basic landing page. Okay. Then we will implement login and sign up, and we will use our backend APIs whatever we have created earlier. So we will use the post request, sign up, and login. Let's wait until all the dependencies installed.
also we will be using a component based library. So shared CM, it's a component based library. So if we just start and we choose a framework, so this is how we can install it. And we have a built-in components, for example a button component. Okay. Then calendar, if we want to use a calendar in our app, directly we can use, so we don't have to write a component, write a code for this component. And if you want to use a card, we can use the card. If we want to use a carousel like this, 1 2 3, we can use this. We also have charts, like this charts, so we have to just install, use this components directly in our app. Okay, there are lot many components here. We want to use the tables, tabs, so we can use this. Let me walk through the folder structure. Front end. So similarly here also we will have a package.json with the dependency, okay, and with the scripts. Then we will have a source folder. Inside that we will have a app folder. Okay, uh, whatever we have to write all the code in the inside the app folder only. Okay, we have a multiple files here. For example, we have a page.js. Okay, uh, if we have to create a file with the name page.js only. Okay, we have to create a file with the name page.js only. Then we have to just write a function. First we have to write a function. Okay, first the page.js is the root folder. Okay, root at the root side, so it will be a home page. Okay, whenever we visit our app, so initially this page.js only we will see. uh, Here is the code, so I will show it once it install. Okay, get installed. So let's run it now with the npm runtime. We can run our app in the development mode. This is the just a basic template given by the Next.js. So we will just get rid of this. So okay, now it's running. So let's go to 3000. So it's compiling. When it's compiled, it will show. But the first time it will take time. It's compiling. This is the main home page. Okay, so get started by editing this. So let's edit something. So here is the get started with the so this is our app. If I save it, so let's, so this is our app, so it get changed. Okay. So let's remove one code. Okay. We will write from scratch. For example, let's change to JS to JSX. So
JS and JSX both are same. So it's just extension for the okay. JSX means mix of HTML and JavaScript. We can say JSX. For example, we can use the H1 tag. Okay, let's say HELL hello your R20 hello world hello world. So we got here hello world. If let's give some style. So with the class name we can give a text red file. Okay, so you have to install a extension. Okay, uh, tailwind tailwind IntelliSense. So you have to install this. Okay, it will give a like this suggestion. So it will give a like this suggestion. 500. Let's say 500. Let's say 400. So all the variants it will give this suggestion. So it will be easy to us. Okay. Now it has the text changed to a red color. So this is how we can give a style through a class name only. Okay. So let's build our home page. Okay. First, let's build a flex box over a top. Class name. So inside we will have a first header. Okay. We will have a header. In that header, we will have a one container. Okay. In that container, we will have a one heading. Heading called share share SLI share snippet. Then inside that we will have another container. Okay. We will have another container. Then okay, let's install this shared CM. Okay. Let's install this shared CM first. Installation, we have to select an exchange. Then we have to copy this. We have to copy this. Let's open terminal. Control C, mark it, server को बंद करो. Then just copy the command. npm shared cm @latest ini. Then enter. So it will install some packages. Let's wait. Let's install. Okay. So here we will use a button. Okay. So ये import का let's copy this. So it has installed what is saying which color you would like to use as a base color. So let B के लिए let's choose zinc. Use force. So it will install some dependencies until let's copy this import btl. Let's top if we want to use it, copy this code. Okay. So I will paste here. So the so this will be a login button. Similarly, another sign up. So this will be
let's make this as a link. Link and so the link will be with the href. You can give a link. It will be a slash gil for sign up. Similar in sign up also. Let's use sign up href. It will be a sign up. So yes, this both will be a let's add. So we have to add the button. First we have to install the button. So we have to run this command to install. So it will install. So we use force. So we use force. So it will make a automatically it will make a folder here. Okay. So it has made a components folder. In that it has added a necessary code for the button, so we can easily use that button. So here main we have a main div container. Okay. Then we have a header, and in that header we have one more container. Then we have a heading called a share snippet. Then we have again have a container. In that container we have a two buttons with a link called login, and one is sign up. Okay. Let add this as child, as child, as child. So let's see how it goes. If I refresh, share snippet on here. So we also have to import the link. We have to also import the link. So, because that's why it's giving us an error. So prof href extra accept a string. Href string. Log. Sign up. So that's it. Okay. Now it got ready. So share snippet login sign up.
Now we will design it. Okay? Now let's design. So ऊपर एक flex flex India flex core, then minimum height screen. No changes. Then let's make it as a containers. So we have to make it center. Okay. For that, COM here container, then mx mx auto क्या है margin है margin auto. So it will make it center. So it made it as a center. Okay. Now it's got center. Then header make last name. Here we will give a border. Okay. Border bottom. Then inside this let's make a content container flags justify between then item center then py4. I will explain it. So it went like so. स्नेयर स्निपेट इधर आ गया, लॉगिन सेटअप इधर आ गया. तो बॉर्डर हमने क्या किया, हेडर को हमने बॉर्डर बॉटम दिया, बॉर्डर बॉटम में दिया. सो बॉटम में एक बॉर्डर आ गया, ये हेडर है. सो इन द हेडर we got a border at the bottom. Then what we have done, so inside the container we have made it as a flex. Flex क्या करता है, तो इसको ना दूरी में करता है. Flex it will make a space, it will make a alignment. So it will make a alignment. So ये दूरी में जाता है. Then what I have just said, flex justify between. So justify अगर हमने justify start कर दिया, so it will go at the start. If we make a justify center, it will come to the center. Okay, it will come to the center, but we want to make a twin. So we got a between space. Then we made an item center. So at vertically it becomes a center. Let's say item start. ये थोड़ा ऊपर गया, ये थोड़ा ऊपर गया, देखो ऊपर थोड़ा कम स्पेस है, ऊपर गया थोड़ा. If I make it justify center, so it came at the center. If I make it justify and it will come to the थोड़ा नीचे आएगा, but we want the center. अभी we want a space between these buttons. Okay, login and sign up, we want a space. ये पूरा जुड़ के है, तो we want a space between them. So ये बटन, दो बटन है. So तो इसके ऊपर ये पेरेंट इसका, तो इसका कंटेनर इसके अंदर क्लास नेम देंगे. क्या करेंगे, इसको फिर से flex, we will make it as a flex. Then we will give a gap between them with the 4. तो 4 क्या है, 16 पिक्सल का गैप आएगा. Then we will make it as a item set. तो अभी यह गैप आ गया. Then it came at a center position. So now header is now ready. Okay. अभी हेडर बन गया.
अभी इसका मेन पेज बनाएंगे, ठीक है। अभी वी विल मेक अ main page. So in that we will have a one section, okay. In that we will have a container. In that we will have a h2, okay, h2 header, second header. Then we will have a paragraph. Then again we will have a button. Button will be sign up only, but here will be a get get started. तो इसको हम आउटलाइन नहीं रखेंगे एज अ चाइल्ड। देन इसका साइज थोड़ा we'll keep it as a large, and class name थोड़ा margin top 6 देंगे। तो in heading we will have code and text plus l9 snippets made simple. This will be a header, and in paragraph we will have called store, share, and manage your code, yes, snippets and text notes with our easy to use ATF4 platform. Then sign up to get started. तो ये बेसिक एक मेन पेज में हेडर हमने बना दिया। अभी मेन पेज होगा, उसके अंदर एक inside that we will have a section, inside we will have a container, then a heading, then a paragraph, then a button. Okay, let's see how it's looking. So this is how it's looking. Now let's style it. Okay, let's give some style. So first we will give a इसको flex one करें। सो एक पर्टिकुलर इसको एक विड्थ मिल जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर विड्थ मिल जाएगा। देन इन अ सेक्शन let's give a padding, okay, padding 20 देंगे इसको। then we will give some background color, background gradient देंगे, gradient to bottom, ठीक है, gradient bg gradient to bottom। तो from background to from background तो एक है ये होगा बैकग्राउंड ब्लैक होगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड ब्लैक, अगर अगर हमारा थीम ब्लैक थीम है तो ब्लैक होगा, अगर वाइट थीम होगा तो वाइट होगा। ये म्यूटेड मतलब थोड़ा शेड आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, थोड़ा ठीक है, बैकग्राउंड पे थोड़ा एक शेड आ गया, ठीक है। तो बीजी ग्रेडियंट दिया, सो बैकग्राउंड में लिटिल बिट केम शेडिंग। नाउ लेट्स गिव सम मोर स्टाइल। अभी नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, इसको कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज अभी ये ना थोड़ा ये बाहर से, so let's make it as little bit center। give it a container, then text center करेंगे इसको, then we will give some spacing at the y-axis 6। थोड़ा ये सेंटर में, अभी कोड अभी सेंटर में आया। देन इसके बीच में हमने स्पेसिंग दिया, सिक्स 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 का स्पेसिंग दिया इन तीनों को, ठीक है। हेडर है, दिस इज अ हेडर, दिस इज अ हेडिंग h2,
This is a paragraph and this is a button. So this is a heading, this is a paragraph, this is a button. तो इसको हेडिंग को ना थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा सो टेक्स्ट 2 XL 3 XL 4 XL सो मल्टीपल अभी फॉन्ट साइज है तो वी विल गिव अ 4 XL then we will give some text color to इसको text muted foreground then tracking type इसको थोड़ा अभी ये बड़ा बन then we also given some text colors और थोड़ा इसको टाइट कर दिया थोड़ा इधर थोड़ा गैप ज्यादा है इसमें अगर if I remove this तो थोड़ा टेक्स्ट के बीच में गैप जरा ज्यादा है if I say tracking tight थोड़ा ये गैप कम आ जाए टेक्स्ट के बीच में पैराग्राफ को थोड़ा बहुत क्लास में इसको टेक्स्ट एक्सेल इसको पैराग्राफ को टेक्स्ट एक्सेल देन टेक्स्ट muted foreground then we will give some max थोड़ा ये खुल जा रहा है ये बहुत खुल जा रहा है ये बहुत बड़ा हो रहा है तो इसको max इसको मार्जिन mx 20 मिनट अभी इसको पर्टिकुलर रेट दिए तो ये 20 मिनट आ गया अभी ना ये बहुत ज़्यादा गया लेट्स ऐड अ वन मोर सेक्शन अभी और एक सेक्शन अभी इसमें ना एक कंटेनर आएगा और एक कंटेनर आएगा अभी सेक्शन पर लेट्स गिव अ क्लास नेम py20 इसको then we will give a कंटेनर क्लास में इसके अंदर और एक div बनाएंगे इसको ना ग्रिड लेआउट कॉलम में एक ही होगा जी कॉलम में एक ही होगा देन मीडियम स्क्रीन में ग्रिड कॉल 3 होगा 3 सेक्शन होगा अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा पहले कोड लिखेंगे ठीक है देन गैप 1 देन इसके अंदर और एक डिव ठीक है इसके अंदर और एक डिव देन इसके अंदर और एक डिव होगा देन एक h3 होगा देन इसके अंदर पैराग्राफ तो इसको ना फ्लेक्स देंगे फ्लेक्स flex all center flex center 6 then space 5 4 देन ना इधर एक फाइल का आइकॉन देंगे फाइल का आइकॉन अभी ये फाइल का आइकॉन अभी नहीं हुआ ठीक है इसको ये लूसिड बोल के आ रहा हूँ तो ये लूसिड इज आइकॉन लाइब्रेरी ये ऑटोमेटिकली शेयर से इंस्टॉल करेगा तो ये फाइल हो गया अभी फाइल हो गया
then your class name is file background is for height 8, then width 8, then text priority and heading के अंदर होगा easy SMI फ्रंट एंड थोड़ा बोरिंग भी होता है बट व्हेन यू कोड edit and delete your code snippet with our interface और ये बन गया तो इसको ना ये ऐसे इसको थोड़ा वो स्टाइल PG primary 10 and P4 इसको राउंड कर राउंड तो ना बैकग्राउंड में थोड़ा शेडिंग आएगा थोड़ा पैडिंग आएगा देन एक राउंडेड लाइक दिस ओके ये राउंड बन गया विद द स्मॉल शेडिंग राउंड देन इसको टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ा एक्सेल देन और बोल्ड कर बोल्ड करेंगे लाइटर टेक्स्ट हो गया अभी सिमिलरली और एक बन ये एक बन गया इसको ना सेम कोड कॉपी करेंगे जो है ना ये है ना फ्लेक्स कंटेनर इसको कॉपी करेंगे इसको ना सिमिलरली और एक बनाएंगे बट इधर क्या होगा शेयर आइकन फाइल नहीं शेयर उसी से एंटर करो वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा शेयर इंपोर्ट हो गया सेम सेम स्टाइल्स बट हेडिंग दूसरा तो क्या होगा शेयर शेयर कोड snippets and text notes with our text notes with others okay and yes paragraph number share ये एक सेक्शन बन गया ये एक सेक्शन बन गया और एक बनाएंगे सेम
सेम कोड कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो। अभी इधर ना लॉक लॉक यूज इट से एंटर दबाओ, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, सिक्योर सिक्योर स्टोरेज snippets are stored. Yes, these you are security and super और exception। अब ये मेन बन गया, ये फुटर बन गया। फुटर में एक div, then copy button, copy icon, then क्या करेंगे, date dot get footer, share the same line, share something, let's start it थोड़ा सा तो क्लास में थोड़ा बॉर्डर एट द टॉप, थोड़ा सा पैडिंग 6, टेक्स्ट थोड़ा छोटा, टेक्स्ट डेड सेव हो रहा है, ठीक है, सेव हो गया। ये बीच में आ गया, थोड़ा लाइट हो, ये बन गया लैंडिंग पेज, सिंपल, एक सिंपल सा एक लैंडिंग पेज बन गया। अभी कोड एंड टेक्स्ट, एक हेडर है हमारा विद लॉगिन एंड साइन अप बटन, एक मेन पेज है हमारा विद थोड़ा सा शेडिंग है बैकग्राउंड पे, और एक 3 सेक्शन से हमारा ऐप का फीचर्स, देन फुटर। अभी बनाएंगे लॉगिन एंड साइन, ओके। अब ना let's say if let's make a folder, login and message sign up। लॉगिन के अंदर पेज डॉट जेएक्स, आपको पेज डॉट जेएसएक्स ही बनाना चाहिए, इसी नाम से आपको login page, then we have to meta, let's make a div
सिंपली इसको कॉपी करो paste. So here would be this is sign up page. So either folder based Next.js is a folder based routing. However, we make a folders. A We'll make a if we make a folder name with called login, it will make a slash login. If we make a folder with sign up, it will make a slash sign up. Let's see. Copy. If we go on slash login, our login page will be loaded. Yeah. Then compile क्या था? It's compile default default to mention default be a login page load. Similarly, if you go your site, here, sign up. Site, GM. We got a sign page. However, we make a folders that routes will be created. You know, main landing page. So we can route through this link button. हमने जो main page पे बनाया था, we can go through those pages with these links. जो हमारा इधर है, जो buttons है, links के ऊपर. So we can route between pages through this link button. Okay. First अभी sign up page, we will make a sign up page. Okay. तो बिना फर्स्ट CL पे जाएंगे तो एक कार्ड कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे स्टोर इसको कॉपी करो जो ये है ना इसको कॉपी करो देन कम टू टर्मिनल जिधर भी आप फ्रंट एंड चला रहे हो उसको कंट्रोल सी करके कैंसिल कर दो उसको कंट्रोल सी देन पेस्ट इट कंट्रोल वी मारो पेस्ट इट देन एंटर so it will add a card component to our app. ठीक है अभी इसको then our will also add a alert we add alert so input पे ऐड कर लेते so input is this input चाहिए ऐसे email user name डालने के लिए so we will also show input हो गया एक साइन अप पेज में एक ड्यू कंटेनर होगा कार्ड go to the card then import करेंगे इसको कॉपी करो इस कोड को then
और also import that input input me then we will इसको कार्ड पे जाएंगे कार्ड पे जाएंगे देन इसको कॉपी कर लो कार्ड का जो ये है कोड इसको कॉपी कर लो देन जस्ट पेस्ट कर लो इसको देन इन हेडर टाइटल क्या देंगे इसको साइन अप पे क्या होगा क्रिएट एन अकाउंट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में होगा enter your info to create an account अभी कंटेंट पे फुटर पे थोड़ा इसको क्लास नेम कंटेनर कर लेंगे इसको कंटेनर फ्लेक्स items center then justify center minimum height screen then p by padding 2 कार्ड पे क्या करेंगे थोड़ा कार्ड फिल होगा next width then header में थोड़ा सा spacing y1 then form साइन अप पे फॉर्म होगा तो वी विल ऐड अ फॉर्म एक्शन नो एक्शन तो इस फॉर्म के अंदर कार्ड कंटेंट फॉर्म के अंदर कार्ड कंटेंट आएगा देन इन कार्ड कंटेंट स्पेस y4 देंगे इसको लेवल में क्या होगा फर्स्ट वी विल टेक अ यूजर नेम यूजर में किस पे लेंगे एक इनपुट पे तो ये सेल्फ क्लोजिंग होगा और यूजर में HTML for user name तो इनको को एक आईडी देंगे क्या होगा आईडी यूजर नेम then input type will be a text ठीक है then इसको required similarly और एक field चाहिए हमको for the password for the password so
यूजर नेम को क्या करेंगे, पासवर्ड, यूजर टाइप विल बी पासवर्ड. Let's see how it's. So if you go to the sign up, click on sign up. It's compiling sign up. REQUI. Right. So you have to import. ये अभी आ गया, एक कार्ड आ गया, ठीक है. इस पे ना कार्ड आ गया. क्रिएट एन अकाउंट, CCOU अकाउंट. सो एंटर योर, ठीक है. ये पासवर्ड है, पासवर्ड विल बी राइट, यूजर नेम. ठीक है. अब ये कार्ड का ये हो गया. देन और एक कंफर्म पासवर्ड का वर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड. So ID दिया, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड. अभी फुटर में हम डालेंगे, कार्ड फुटर में एक इंपोर्ट कर लो. ये स्लैश कंपोनेंट स्लैश है ना, इसमें एंटर करो, ऑटोमेटिकली इट विल गेट इंपोर्टेड एट द टॉप. इधर एक ये हमारा साइन अप बटन, साइन अप बटन. तो इसको थोड़ा पास करेंगे, लेट्स कॉम स्पेस वाई, स्पेस वाई, स्पेस div होगा. Already have अकाउंट, ऑलरेडी अकाउंट है. तो थोड़ा स्पेसिंग देंगे, स्पेस देंगे. तो आप अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन करो, इसको लॉग इन, एक लिंक देंगे, लिंक होगा लॉग इन. सो http slash log. So let's do some try. Text primary, text primary होगा हमारे करने पे टेक्स्ट सेंटर करेंगे इसको, एंड टेक्स्ट स्वैप. तो ऐसा साइन अप बटन सेंटर पे आ गया, ये भी सेंटर पे. क्लिक ऑन दिस, द लॉगिन पेज विल बी लॉग. log card to form to design. तो स्पेस नहीं है, ये यूजर नेम और इनको स्पेस नहीं है, ठीक है. तो क्या क्लास नेम और स्पेस वाई 4. तो क्या है, वाई पे एक थोड़ा स्पेस है, ठीक है.
सिमिलरली इसको कॉपी कर लो, पासवर्ड भी डाल दो और कंफर्म पासवर्ड भी तो अभी ये कार्ड बन गया। कार्ड अभी मोर एट दिस सेंटर, पूरा सेंटर में हो गया। अभी ना इसका we will make some functions, अभी स्टेट बनाएंगे, ठीक है। इसको अभी तो इस पे ना एक प्लेस होल्डर भी डालेंगे, प्लेस प्लेस होल्डर में क्या होगा, यूजर नेम, इसको अब इधर प्लेस होल्डर पे so got a some प्लेस होल्डर, ठीक है। अभी ना इसको स्टेट्स बनाएंगे, ठीक है। सेंटर इसको यूजर नेम whatever the user try to input we will store something, तो एक ना स्टेट बनाएंगे, use state, use state, इसको इंपोर्ट कर लो रिएक्ट से, ठीक है। इसको रिएक्ट से इंपोर्ट कर लो यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट रिएक्ट से इंपोर्ट कर लो, then make a const, then make an array, then make like this. So username, the next set user, इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। सिमिलरली पासवर्ड को password, then password, then confirm password confirm p को कैपिटल कर लो, then c को सेट को भी confirm password, अभी तीन स्टेट बन गया। देखिए यूजर नेम के लिए एक, पासवर्ड के लिए एक, कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो यू स्टेट इज अ स्टेट, यू स्टेट क्या है, which helps to add a state variable to our component। so एक क्या करेगा, एक we want to have a वैल्यू, तो जो भी यूजर इनपुट पे यूजर ने वैल्यू करेगा, वी हैव टू स्टोर समवेयर, टू स्टोर दैट वी आर यूजिंग अ यू स्टेट, इट इज अ हुक, ठीक है। इट इज अ हुक, तो वी आर यूजिंग अ यूज स्टेट हियर, ठीक है। तो इसको we are importing a component that meets use state to belongs to a client component, ठीक है। ये क्लाइंट कंपोनेंट नहीं होता है, इसलिए हमको क्या करना है, ऊपर यूज क्लाइंट, ठीक है। यूज क्लाइंट को अभी अभी आ गया, ठीक है। अभी कुछ अभी आ गया, तो इस यूजर को सेट करेंगे, ठीक है। ये इनपुट है ना, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा ना, ये वैल्यू, ये यूजर ने वैल्यू विल बी इन आवर इनपुट, ठीक है। whenever on change, ठीक है, on change, ठीक है।
whenever on change मतलब जो जब भी user try to change this username, we will set this username into our store, ठीक है। इसके अंदर एक इवेंट आएगा ई, देन क्या करेंगे set username e dot target dot value, ठीक है। इसके अंदर ये सेट होगा, इसके अंदर ये सेट होगा जब भी यूजर ने इसको अंदर नीचे लगा, जब भी यूजर changes the value we will set into our state, ठीक है। सिमिलरली we'll make to the पासवर्ड को भी सिमिलर कर, ठीक है। पासवर्ड को पासवर्ड कर लो, then make it the set password, similarly for confirm password, confirm password, then set confirm password, ये हो गया, ठीक है। अभी इसको ना एरर हैंडलिंग भी डाल देंगे, एरर हैंडलिंग भी डाल देंगे, उसके लिए भी एक यूज स्टेट बनाएंगे, ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट एम्प्टी वैल्यू से रखेंगे, पासवर्ड पे भी एम्प्टी वैल्यू, कंफर्म पासवर्ड पे भी एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। और एरर पे भी एक एम्प्टी वैल्यू डालेंगे एंड कांस्टेंट एरर error then set set error, ठीक है। और एक लोडिंग का भी एक स्टेट बना, cost is loading set is loading, तो इसके अंदर हम बूलियन वैल्यू रखेंगे, और एक ना एक राउटर भी इंपोर्ट करेंगे, राउटर विल बी इंपोर्ट फ्रॉम स्लैश राउटर से नहीं, नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से इंपोर्ट होना चाहिए, राउटर स्लैश नेविगेशन से इंपोर्ट होना चाहिए, एक राउटर भी बना लिया, ठीक है। अभी एरर हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। इधर कंट्री पे क्या करेंगे, अगर कुछ एरर है समझो, तो वी विल शो एन अलर्ट, ठीक है। तो अलर्ट इधर से कॉपी करना, एक अलर्ट को कॉपी देन पेस्ट, ब्रैकेट्स नहीं, राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट कर लो, देन हियर ये टर्मिनल निकाल दो, डिस्क्रिप्शन को भी इंपोर्ट कर लो, देन टाइटल में क्या करो, इसको अलर्ट, ये आ रहा है, ये मल्टी वेरिएंट विल बी अ this TRU destructive and title कुछ सर्कल लूसिड आइकॉन, एक अलर्ट का आइकॉन, H4 H4 देन डिस्क्रिप्शन में जो भी एरर है उसको दिखा, जो भी एरर है उसको दिखा देते हैं। अब ये एरर भी हमने दिखाया, अभी ना हैंडल
जब भी यूजर सबमिट करेगा तो इसको ना ये फॉर्म फुटर से बाहर रहना चाहिए। इसको ना बटन का टाइप विल बी सबमिट। इसका बटन का टाइप सबमिट होगा। जब भी यूजर सबमिट मारेगा तो वी विल कॉल अ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, हैंडल हैंडल सब। सो एक फंक्शन मानेंगे। ठीक है, जो होगा असिंक होगा एंड इसके अंदर एक इवेंट आएगा। ठीक है, इसको ना ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो भी बाय डिफॉल्ट इवेंट्स होंगे उसको हम प्रिवेंट करेंगे, मतलब ब्लॉक करेंगे। ठीक है, हम कस्टम कोड लिखेंगे। हैंडल जब भी होगा हम कस्टम लिखेंगे। ठीक है, अभी इनिशियली क्या करेंगे, सेट एरर को ना एक एम्प्टी वैल्यू देंगे। ठीक है, सेट स्मॉल सेट इनिशियली वी विल गिव अ एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, अगर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो सेट एरर में क्या करेंगे, स्टेट को अपडेट करेंगे। सेट स्टेट से क्या होता है, ये स्टेट है ना, ये स्टेट अपडेट होता है। तो अगर पासवर्ड सेम नहीं है तो क्या करेंगे, पासवर्ड डू नॉट MATCH डू नॉट मैच करेंगे, इसको फंक्शन को रिटर्न कर लेंगे। सो ये रिटर्न इधर ही रिटर्न किया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर पासवर्ड सेम है तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, रिटर्न है, रिटर्न बोले तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, रिटर्न कर लेगा, इधर इधर से ही रिटर्न करेगा ये फंक्शन, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, देन इसको करेंगे सेट लोडिंग करेंगे, इसको सेट लोडिंग ट्रू करेंगे। देन वी विल ऐड अ ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, देन कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, सेट एरर डालेंगे। सेट एरर में क्या डालेंगे, something समथिंग ऑन रॉन्ग। देन एक फाइनल की डाल देंगे, फाइनल के अंदर सेट लोडिंग फॉल्स, फॉल्स, सेट लोडिंग फॉल्स। ठीक, अभी ट्राई कैच में क्या करेंगे, जो भी हमारा बैकएंड है ना, बैकएंड के अंदर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, फेच, इस फेच से हम एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, उससे हम बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको अवेट करते हैं। ठीक है, इसको अवेट करेंगे। देन HTTP बैकएंड वो क्या है, लोकल LOCAL लोकल और 3001 पे चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर SIGN UP साइन अप। ठीक है, साइन अप और बॉडी भी भेजना चाहिए हमको। बॉडी में पहला मेथड डिसाइड कर लो, मेथड कौन सा है। साइन अप का मेथड क्या है, साइन अप का मेथड पोस्ट रिक्वेस्ट है, राइट। साइन अप का पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा। देन हेडर भी सेट करना पड़ेगा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर सेंडिंग। तो CONTENT कंटेंट टाइप वी आर सेंडिंग दिस API application स्लैश JSON डेटा सेंड कर रहे हैं हम, किस पे, बॉडी पे।
बॉडी पे सेंड कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर जेसन डेटा, ठीक है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसको करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। किसको स्ट्रिंगिफाई करना है आपको? यूजर नेम और पासवर्ड को स्ट्रिंगिफाई करके भेजना है। तो यूजर नेम और पासवर्ड को हम बॉडी के अंदर भेजेंगे फेच रिक्वेस्ट से। पहले हम थंडर क्लाइंट से भेजते थे, अभी ये हमारे पास अभी फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से with the using of fetch function we can put a request to our backend। so हमारा backend इस URL पे चल रहा है 3001 पे, हमारा 3001 पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, लोकल होस्ट 3001 पे हमारा बैकएंड चल रहा है, 3000 पे हमारा फ्रंट एंड चल रहा है, ठीक है। अभी इसको हमको मिलेगा रेस्पॉन्स एज अ रिटर्न। अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर नहीं है, ठीक है, नॉट नॉट ऑपरेटर, रेस्पॉन्स डॉट ओके ऑपरेटर नहीं है, तो क्या करेंगे, एरर डेटा को ले, इसको रेस्पॉन्स को अवॉइड करेंगे, इसके अंदर से टेक्स्ट लेंगे, देन व्हाट वी विल डू, इसको थ्रो जो भी एरर डेटा है थ्रो, या फिर अगर डेटा नहीं है तो API failed to create SCCOU। तो ये जो भी थ्रो करेंगे ना, हमको इधर कैच में मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो हम एरर को इधर सेट करेंगे, एरर डॉट MESSAG मैसेज। अगर मैसेज मिला तो मैसेज सेंड करेंगे, या फिर समथिंग ऑन रॉन्ग, ठीक है। अभी अगर नॉट ओके है तो ये इफ एल्स इफ कंडीशन रन करें, अगर ओके है हम क्या करेंगे, राउटर डॉट पुश लॉगिन पे भेजें। अभी साइन अप हो गया, अभी लॉगिन कर लो, ऐसा लॉगिन पे हम पुश करेंगे यूजर को, तो अभी साइन अप से लॉगिन को पुश हो जाएगा, ठीक है। अभी ना जब भी लोडिंग होगा ना, जब भी सबमिट करेगा यूजर हैंडल सबमिट, तो फॉर्म के अंदर एक हैंडलर हमको सेट करना होता है, ठीक है। ऑन कैपिटल SUP ऑन सबमिट चेन हैंडल सबमिट को, ये फंक्शन है ना, ये जो हैंडल सबमिट, सो वी हैव टू सबमिट ये इवेंट, जो भी फंक्शन है इधर हमको सेट करने पड़ेगा। जब भी यूजर press this button, this function will be called, okay। let's test। तो हम क्या करेंगे, एक अलर्ट भी कर, so इस sign up successful, एक अलर्ट भी करेंगे, so तो वो हमारा इसका भी एक नया टर्मिनल खोल लो एंड देन रन दैट, जो स्टूडियो है ना, बैकएंड पे जाओ, बैकएंड फोल्डर पे जाओ, npx charisma studio studio open, so we will see whether the user is created or not। So that's open।
सो अभी के लिए वी डोंट हैव एनी यूजर्स इन आवर टेबल, एक है तो इसको डिलीट करना है, तो लेट्स डिलीट इट। वी हैव 0 यूजर्स एंड 0 फाइल्स, ठीक है। अभी 0 यूजर्स, अभी इधर यूजर क्रिएट होना चाहिए। यूजर नेम पासवर्ड, पासवर्ड will be AJITPATIL AJITPATIL ये थोड़ा बिगड़ गया है, क्यों बिगड़ गया बटन इसका। फ्लेक्स स्पेस स्पेस 5 यस आई कैन। तो इधर क्या करेंगे ना, इसको ऐसा करेंगे, अगर इज लोडिंग है तो क्या करेंगे, क्रिएटिंग अगर इज लोड क्या होगा, लेट मी एक्सप्लेन। तो जब भी यूज़र सबमिट करेगा या हैंडल सबमिट फंक्शन होगा, तो अगर पासवर्ड सेम नहीं है तो सेट पासवर्ड डू नॉट मैच बोल के एक अलर्ट मैसेज आएगा। अगर सेम है तो सेट लोडिंग ट्रू कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर लोडिंग ट्रू है तो क्रिएटिंग अकाउंट बोल के आएगा, अगर फॉल्स है तो साइन अप बोल के आएगा, ठीक है। अभी ना पासवर्ड ना गलत मैचिंग नहीं डालेंगे, ठीक है। क्या गया, अलर्ट इज नॉट, तो ऊपर ना अलर्ट इम्पोर्ट पासवर्ड AJIT इसके अंदर AJIT4 डालेंगे, पासवर्ड डू नॉट मैच आएगा, एक लेटर कैंसिल किया। अभी इफ आई प्रेस दिस सबमिट फेल टू फेच आएगा, क्या रहा है इस पे चेक करेंगे। तो नेटवर्क फिक्शन में यू कैन चेक है ना, कोरस अच्छा स्ट्रिक बैकएंड में हमको ये कोरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो वी हैव टू गो टू द बैकएंड, स्टॉप करेंगे सर्वर को, देन वी विल इंस्टॉल दिस पैकेज, ठीक है। इंस्टॉल दिस पैकेज, देन इसको रिक्वायर करना है किधर, बैकएंड के अंदर index.js, ठीक है। सो रिक्वायर कर लो, इसको कॉन्स्ट करेंगे, then what we have to do app.use, इसको app.use के
press continue on save अभी ये restarting अभी चल रहा है so let's put the request so क्लियर करेंगे रिक्वेस्ट को साइन अप पेंडिंग है अभी पेंडिंग है साइन अप सक्सेसफुली अभी ओके दबाया तो ये लॉगिन पेज पे जाना चाहिए बिकॉज वी हैव पुश्ड इट ठीक है अभी वेट करेंगे अभी लॉगिन पेज पे पुश हुआ वी चेक इन अवर प्रिज्मा स्टोर अगर रिफ्रेश किया तो यूजर क्रिएट हो गया ठीक है यूजर क्रिएट हो गया अजीत पाटिल ठीक है और एक यूजर क्रिएट करेंगे ठीक है तो अभी क्या करेंगे टू पार्ट चला सकते इसका पार्ट टीओ पी ए टी एच एस एच ए 3 4 1 2 3 if I press इसको क्लियर करो if I press sign up creating account sign up successfully ओके दबाया तो लॉगिन पेज पे गया अभी if we refresh अभी टू पाठशाला आना चाहिए अभी टू पाठशाला आ गया तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ साइन अप पेज ठीक है अभी सिमिलरली अभी लॉगिन पेज जो भी हमने यूजर क्रिएट किया ना सो वी हैव टू लॉग इन थ्रू दैट यूजर अभी ना सेम कोड ना अभी क्या करेंगे सेम कोड को यूज करेंगे सेम कॉपी करो पूरा साइन अप को सो लेट्स पेस्ट इट अभी एडिट करेंगे साइन अप करेंगे लॉगिन करेंगे सेम यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड एरर सब कुछ सेम होगा और इधर क्या होगा साइन अप की जगह लॉगिन होगा ठीक है लॉगिन होगा इधर साइन लॉग not in successfully failed to log in करेंगे then create our account से log in to your ACCO so log into your account करेंगे इसको then the same so इसको इधर क्या करेंगे don't count then sign up yes right sign up सेम और कुछ भी चेंजेस नहीं सेव टू सेव now go login पेज बन गया पूरा सेम है तो लेट्स चेंज दिस बटन है also और इसको करेंगे log क्या किया था हमने टू पार्ट ऐसा लगा 1 2 3 4 डाला पासवर्ड 1 2 3 4 फाइल लॉगिन सक्सेसफुल हमको क्या मिलेगा लॉगिन के अंदर क्या मिलता है हमको रेस्पॉन्स पे टोकन मिलता है ठीक है अभी टोकन मिल गया सो वी हैव अ टोकन नाउ अभी इस टोकन को हमको सेव करना है ठीक है सो वी हैव टू so we have to save the token okay अभी साइन अप एंड लॉगिन पेज बन गया अभी ना और एक ना अभी डैशबोर्ड DASHBOAR डैशबोर्ड ठीक है then what we will do
अभी ना एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ऑल ओवर द ऐप वी कैन ट्रैक। कॉन्टेक्स्ट से हम क्या ट्रैक करेंगे, वेदर द यूजर इज लॉग इन और नॉट। सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे auth provider provider डॉट जेएस, ठीक है। auth provider डॉट जेएस बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट से एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज effect, then use state, these three things import, ठीक है। देन अभी ये कॉन्टेक्स्ट बनाओ, एक्सपोर्ट करो उसको, देन auth auth कॉन्टेक्स्ट बना लो, देन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो ये है ना क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। सो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में ना हमको क्या 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 कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहिए, हमको एक टोकन ट्रैक करना, ठीक है। इनिशियली उसका वैल्यू नल रखेंगे, ठीक है, ठीक है। एक टोकन चाहिए हमको, एक चाहिए लॉगिन फंक्शन, ठीक है। एक लॉगिन फंक्शन करेंगे, एक ना लॉग आउट फंक्शन बनाएंगे। अभी के लिए एम्प्टी फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है, ये एरो फंक्शंस, एरो फंक्शंस। और एक करेंगे इज ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड इनिशियली क्या करेंगे, इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स करेंगे, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट अभी बन गया, अभी इस कॉन्टेक्स्ट को हमको ना प्रोवाइड करना, ठीक है। वी हैव टू प्रोवाइड दिस फंक्शन टू आवर ऐप। सो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे auth provider, auth provider, we will create a function called auth provider. So we will make a function called auth provider. So auth provider, we will make a auth provider। इसके अंदर ना एक, अभी इसके अंदर auth provider के अंदर ना we will track the token, इससे स्टोर करेंगे टोकन को, हमको स्टोर करना है किधर, तो यूज स्टेट वी विल यूज अ यूज स्टेट, यूज so we will for that we will use a state token and make a set token, एक टोकन और एक सेट टोकन होगा। एंड क्या करेंगे, फॉर बनाएंगे स्टेट, तो इनिशियली टोकन क्या रहेगा, नल रहेगा, ठीक है। टू एंड फिगर इज loaded set बनाओगे इज लोडेड कैरेक्टर, एक ना यूज इफेक्ट, ये एक ही बार करो, क्या करेंगे हम, इस टोकन को ना लोकल स्टोरेज पे हम सेव करेंगे, लोकल स्टोरेज पे हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, फर्स्ट गेट आइटम करेंगे, ठीक है। ऑथ टोकन, ठीक है, ऑलरेडी लॉगिन है कि नहीं कैसे चेक करेंगे हम, वेदर जब भी साइन अप लॉगिन करेगा यूजर, तो हम क्या करेंगे, उस लॉगिन को ना लोकल स्टोरेज पे हम सेट करेंगे। जब भी लॉगिन करेगा यूजर, ये लॉगिन पेज पे जाएंगे, इसको ना लोकल स्टोरेज पे ना वी आर गेटिंग इन रेस्पॉन्सर
लॉगिन टोकन, ठीक है, लॉगिन टोकन हमको मिल रहा है, ठीक है, लॉगिन टोकन मिल रहा है, इसको हमको टोकन को सेट करना है, ठीक है। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, जिधर इधर ऑथ प्रोवाइडर के अंदर एक लॉगिन का एक फंक्शन बनाएंगे। क्या करेगा वो, एक लॉगिन एरो फंक्शन बनाएंगे, जो हमारा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या करेगा, ऑथ टोकन को सेट करेगा। और टोकन किधर से मिलेगा हमको, इधर से मिलेगा। न्यू टोकन किधर से मिलेगा, न्यू टोकन, टोकन हमको न्यू टोकन से मिलेगा, लोकल स्टोरेज पे सेव करेंगे, देन सेट टोकन पे भी हमको न्यू टोकन सेट करेंगे, ठीक है। अभी लॉग आउट के लिए क्या करेंगे, लॉग आउट का भी एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और इसको एम्प्टी फंक्शन, क्या करें लॉग आउट में, क्या करें जो भी लोकल लोकल स्टोरेज में हमारा है ना, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसको ना मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कोड लिखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, देन इट विल बी, अभी अभी ऑथ प्रोवाइडर बनाएंगे, इसको रिटर्न करेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, तो चिल्ड्रन हमको इधर से मिलेगा, चिल्ड्रन इधर से मिलेंगे, उसको रेंडर कर लेंगे, देन प्रोवाइडर और प्रोवाइडर बनाएंगे, देन इस और प्रोवाइडर को वैल्यू देंगे, क्या क्या वैल्यू देंगे, एक ऑब्जेक्ट देंगे, उसके अंदर फर्स्ट टोकन देंगे, और लॉगिन फंक्शन देंगे, और एक लॉग आउट, जो लॉग आउट फंक्शन देंगे, और एक इज ऑथेंटिकेटेड, इज ऑथेंटिकेटेड, सो वी कैन ट्रैक, अगर क्या होगा, अगर टोकन है तो ट्रू, इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू, अगर टोकन नहीं है तो फॉल्स, ऑथेंटिकेटेड फॉल्स। ये बन गया हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट। सेट स्टोर्ड, ऑलरेडी स्टोर होगा तो टोकन नहीं, तो इसको हम तो करना है लेआउट पे, इसको कॉल करना है, ठीक है। इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को हमको यूज करना है। अभी तो ऑथ प्रोवाइडर, ऑथ कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर हमारे हमने बना लिया, बट इसको ना यूज करना पड़ेगा, इसको हम वी विल यूज इट इन दी लेआउट। अभी इसको ऑथ ऑथ प्रोवाइडर अभी इधर सजेशन है, इस पे एंटर दबाओ, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। इस चिल्ड्रन को इसके ऑथ प्रोवाइडर के अंदर डालो, इस चिल्ड्रन को, सो ये चिल्ड्रन ऑथ प्रोवाइडर को मिल रहा है, वो इधर फिर से इधर डाल रहा है, ठीक है। और प्रोवाइडर में इसको पूरा ऐप से, ये रूट लेआउट है, तो रूट लेआउट के अंदर जो भी करेंगे ना, ये पूरा हमारा ऐप को रैप अप कर देगा। सो वी कैन नाउ यूज दिस वैल्यूज, यूज दिस वैल्यूज थ्रू आउट अवर ऐप, ठीक है, थ्रू आउट अवर ऐप। अभी ना ये लॉगिन फंक्शन लॉगिन करने समय हमको कॉल करना है, लो जी
login को ऐसा तो हमको क्या करना है, हमको ना अभी हुक्स बनाना चाहिए। अभी इसको किसी कंपोनेंट में यूज करना है तो वी हैव टू क्रिएट अ हुक्स, ठीक है। इसको हुक्स में क्या करेंगे, यूज डॉट JSX बनाएंगे और इसके ऊपर यूज यूज क्लाइंट, देन इंपोर्ट क्या होगा गेट। इसके अंदर ना कभी भी उस कॉन्टेक्स्ट जो हमने इधर बनाया ना, जो कॉन्टेक्स्ट, इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए हमको हुक्स बनाना चाहिए। इसके लिए हमको यूज कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को यूज करना चाहिए। एक्सपोर्ट क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे जो हमको वो ऑथ कॉन्टेक्स्ट ला के देगा। ऑथ यूज ऑथ करके एक फंक्शन करेंगे, ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट को ला, ये जो है यूज कॉन्टेक्स्ट, हमने जो कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट को ला के देगा। इसको हम रिटर्न कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न, अगर रिटर्न context is equals to undefined है तो एक एरर थ्रो, और अगर हम यूज ऑथ प्रोवाइडर को, अभी तो हमने प्रोवाइडर पूरा ऐप में रैप अप किए, अगर हम ये ऑथ प्रोवाइडर पर्टिकुलर कंपोनेंट में अगर ऐप प्रोवाइडर किया ना, सो ये वी कैन यूज यूज ऑफ ओनली टू दैट कंपोनेंट, अगर उससे बाहर यूज किया तो ये एरर थ्रो कर रहे हैं, बस यही है उसका मीनिंग। अभी इस यूज ऑफ को इधर लॉगिन पेज पे कॉल करना, यूज ऑफ उसको, यूज ऑफ को एंटर, यूज ऑथ को हमने इंपोर्ट कर लिया इधर, ठीक है, यूज ऑथ को इंपोर्ट कर लिया। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में वी हैव नाउ दैट कॉन्टेक्स्ट, इसको होवर इधर हमको लॉगिन फंक्शन मिल जाए, ठीक है। आगे ये लॉगिन फंक्शन है, लॉगिन फंक्शन ये है, ठीक है, ये लॉगिन फंक्शन ये है। लॉगिन फंक्शन क्या कर रहा है, लोकल स्टोरेज को वो टोकन सेट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वी नीड दैट टोकन whenever we want to request a request to backend, we want that token, so we are storing that token into a local storage, then we are providing through our auth provider, okay, and we are using that context through use auth hook। अभी इसको लॉगिन के अंदर हमको ये टोकन, इस रेस्पॉन्स के अंदर हमको टोकन मिल रहा है, सो वी हैव टू सेट दैट टोकन, ओके। ये रेस्पॉन्स है ना, हमको इधर कॉन्स्ट डेटा मिलेगा, इधर से रेस्पॉन्स डॉट जेसन किया तो we await it, we are getting a data, then data dot token, ठीक है, डेटा डॉट टोकन के अंदर हमको टोकन मिल रहा है, हमको ये लॉगिन फंक्शन कॉल कर रही है, ये लॉगिन फंक्शन क्या करेगा, ये लॉगिन फंक्शन लोकल स्टोरेज पे सेट करेगा, ठीक है। whenever we want to need a token, we can use that through our auth context provider, ठीक है। अभी ना अभी के लिए क्या करेंगे, we are getting some errors, you are importing a component that need a create
अभी हमको यूज इफेक्ट को हमने इंपोर्ट नहीं किया इधर so use effect को import that use context को भी you cannot provide is undefined ठीक है इसको ना आया use context use पे we are ready so we ये context हमको provide करना पड़ेगा ठीक है तो जो हम ये context रिटर्न कर रहे हैं ना ये context ये auth context we have to so we have to provide this is how we debug अभी लॉग इन करके देखेंगे 2 पार्ट चला पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 था पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 करेंगे 3 करें तो पासवर्ड नॉट मैच हो रहा है तो इफ वी पुट 4 देन अभी ना ये लोकल स्टोरेज किधर होगा इफ वी इंस्पेक्ट इट राइट क्लिक करो ये इंस्पेक्ट है ना इंस्पेक्ट दबाओ एप्लीकेशन है ना इसके एप्लीकेशन पे जाओ देन इधर है लोकल स्टोरेज इधर लोकल स्टोरेज पे इधर सेट हो ठीक है इसको मैं डेट जो भी है ना अगर लॉगिन दबाया ना वी आर सेविंग दिस टोकन इन अ लोकल स्टोरेज विद द की ऑथ टोकन अगर हम लॉगिन करें तो वो टोकन जो भी हमारे रिक्वेस्ट पे इधर सेव होना चाहिए टोकन ठीक है सो इफ यू लॉगिन क्या हो रहा है इसको फेल्ड लॉगिन किया तो इसको क्रिएटिंग अकाउंट फेल टू फैच क्रिएटिंग अकाउंट तो क्रिएटिंग क्या होना चाहिए होना चाहिए फेल भी हो रहा है क्यों हो रहा है we have to see running app crash हो so cannot set after they are sent to the client so cannot set after this to go to the back end next express.json से पहले अभी let's clear let's go to the login प्रिंटिंग आ रहा है फिर से फेल हो रहा है क्या हो रहा है इसके अंदर अभी ये रनिंग था अभी करेंगे login pending login successful if I do okay अभी ना if we check in the applications ये auth टोकन हमारा अभी सेव हो रहा है अभी लोकल स्टोरेज पे सेव हो रहा है अगर लॉगिन है तो वी डोंट वांट टू show the login page and sign up page already login here so we don't have to show the login page okay इसको हम क्या करेंगे इसको बाद में लॉगिन के अंदर में क्या विंडो क्या करेंगे लॉगिन पेज पे जाएंगे we will do a use effect use effect को import कर लेंगे effect
we import this user file from here, and we will already we have a login, and इधर तो कैसे हम टोकन भी रिसीव करें, we will check. अगर ऑलरेडी टोकन है तो लॉगिन तो ऑलरेडी है, तो we will send them into a dashboard. डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड पे सेंड करेंगे इसको. कैसे? राउटर डॉट पुश स्लैश DAMessage स्लैश डैशबोर्ड. अगर टोकन है तो स्लैश डैशबोर्ड को पुश करो. तो अभी डैशबोर्ड को ऑटोमेटिकली उसने रीडायरेक्ट किया. ठीक है, अगर मैं स्लैश लॉगिन पे गया तो ये ऑटोमेटिकली इट विल रीडायरेक्ट. क्या इशू है इसको डिलीट करेंगे. यूआरएल का कैश होगा, पासवर्ड 1234 1234. ठीक है, लॉगिन फेल टू फैच. क्या हुआ? हमारा बैकएंड क्रैश हुआ. उसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा. अभी के लिए हमको अच्छा लॉगिन सक्सेसफुली. इसको भी डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना चाहिए, तो नहीं करा. क्यों? बिकॉज इट्स रनिंग ओनली वंस. जब भी होगा डॉट पुश DAMessage BOAR एप्लीकेशन पे टोकन फायर रिफ्रेश. whether we are token code तो कंसोल पे अच्छा नल आ रहा है. क्यों आ रहा है? एप्लीकेशन पे और टोकन और टोकन लॉक तो लॉक करता है. और why we are not getting store token we are sending token here. Sending token here.
तो ना इसको हमने यूज ही नहीं किया। अगर क्या बोल रहा है ये, इफ स्टोर टोकन है तो ही हम सेट करेंगे, तो ही हम सेट करेंगे। और ना नहीं करेंगे, इस पे क्या करेंगे, सेट इज लोडेड कर देंगे। और अगर इफ इज लोडेड नहीं है तो अभी हमको और प्रोवाइडर हमको सेट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर नहीं भेजेंगे, नल भेजेंगे। अभी चेक करें, अभी ना अभी रीडायरेक्ट होना चाहिए, अभी रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन पे अभी टोकन है। इफ वी गो टू लॉगिन से इट शुड रीडायरेक्ट टू द डैशबोर्ड पेज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लॉग इन, क्योंकि हमारा टोकन ऑलरेडी है, तो लॉगिन है अभी, तो डैशबोर्ड पे आए अभी डायरेक्टली डैशबोर्ड पे हमको भेज रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास अ, अ, अभी हमारे पास टोकन है, वी कैन नाउ रिक्वेस्ट टू दी बैकएंड। अभी ना का यूजर का नेम और ये करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको टास्क दिया था असाइनमेंट, ठीक है, whether we have a route to get a user name and password, यही है। तो ना इधर क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट करेंगे, गेट स्लैश यूजर, हम क्या करेंगे, असिंक, असिंक, उसके अंदर हमको दो चीज़ें मिलता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। देन what we have to do, इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे और इसके अंदर ऑथेंटिकेटेड टोकन भी करेंगे। और ये नीचे अगर यूज़र नेम है तो यूज़र नेम, तो हम क्या करेंगे, अगर यूज़र को सेंड करेंगे, सो स्लैश यूज़र पे वी कैन नाउ पुट अ रिक्वेस्ट, ठीक है, वी कैन नाउ पुट अ रिक्वेस्ट। तो डैशबोर्ड पे क्या करेंगे, तो हम AI यूज करो, make a get request user fetch to slash user and क्या हमने कोड अभी इसके ना फर्स्ट वी विल import a user, use auth को import कर लेंगे, then we will get a token, okay, then what we will do, use effect should be token, use effect के अंदर क्या करेंगे, जब भी टोकन है तो क्या करना चाहिए हमको, एक
लेकर user get पूरा कोड लिख दिया इसमें। अभी ये टू पाठशाला का यूजर हमने लॉगिन किया है टू पाठशाला से, ठीक है। अभी यूजर मिल गया आपको, यूजर क्या है, टू पाठशाला डॉट कॉम। अभी ना इधर एक लॉग आउट बटन भी बनाएंगे, ठीक है। अभी इधर क्या करेंगे, BU33ON एक लॉग आउट बटन लॉग आउट बटन, ठीक है। इस पे ऑन क्लिक, जब भी ऑन क्लिक किया तो हमको लॉग आउट करना, ठीक है। तो लॉग आउट किधर से मिलेगा हमको, यूज ऑथ से मिलेगा, लॉग आउट यूज ऑथ से मिलेगा। तो ये तो जस्ट ये हो गया, तो ये लॉग आउट बटन लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। लॉग आउट बटन है, तो इफ आई क्लिक इट, तो जा रहा है, ठीक है। अभी ये ना इधर क्या करेंगे, अभी लॉग आउट तो हो रहा है, सी ये लोकल स्टोरेज से टोकन गया अभी, फिर भी इधर ही है। वी डोंट वांट दिस, अगर लॉग आउट हुआ तो डैशबोर्ड ओपन नहीं होना चाहिए, ये लॉगिन के अंदर वी वांट टू रीडायरेक्ट इट इनटू अ लॉगिन पेज। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये ना इसको एआई से पूछेंगे, if the sugar is फंक्शन बनाएंगे, तो क्या करेंगे इसको, या राउटर को इंपोर्ट करेंगे, यूज राउटर, यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट डॉट नेविगेशन से, लॉग आउट पे हम लॉग आउट फंक्शन कॉल करेंगे, ये हैंडल लॉग आउट इधर देंगे, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, राउटर डॉट डैश राउटर डॉट पुश किधर, एक लो लॉगिन को पुश कर, so we will do like this, if I do logout then login को पुश कर दिया, मुझे फिर से रिडायर करना, लॉगिन को लॉगआउट को पुश कर दिया ऐसा, ठीक है। फिर रिफ्रेश, अभी लॉगिन पे ही है। अभी ना अजीब पाटिल से करेंगे, अजीब पाटिल नहीं करता, ये जे आई क्या इसको यूजर को हम अजीब पाटिल का यूजर डिलीट कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे, शुरू से पूरा टेस्ट करेंगे अभी तक क्या, ठीक है। वी विल फर्स्ट क्रिएट अ अजीब पाटिल यूजर 1 2 3 4, 1 2 3 करे तो साइन अप किया तो पासवर्ड डू नॉट मैच आया, 4 किया तो अभी मैच होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, साइन अप हो गया, यूजर क्रिएट हो गया, अभी अभी लॉगिन पेज को रीडायरेक्ट हुआ, देन वी हैव टू लॉग इन विद आवर यूजर अकाउंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, if we log in successfully it should redirect to the dashboard, डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो रहा है। अब ये
यूजर को फेच कर रहा है बट ये फेच फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? इफ आई रिफ्रेश तो फेल फेच, तो हमारा बैकएंड क्रैश हुआ शायद। रिस्टार्ट मैं देखता हूँ वो क्या एरर होती है, देखेंगे। इफ आई रिफ्रेश, लोडिंग है, यूजर को फेच कर रहा है, यूजर फेच कर दिया उसने, ठीक है। इफ आई लॉग आउट, लॉग इन पे भेज दिया बट फिर से ये रिएक्ट कर रहा है। तो हमको एक तो एक चीज करना है हमको, किधर यूज, किधर यूज प्रोवाइडर पे क्या करना चाहिए हमको, आर ओ यू टी आर, आर ओ यू टी आर राउटर को इंपोर्ट करना, यूज राउटर को इंपोर्ट कर लो। जब ये लॉग आउट कर देना, हम क्या करो, राउटर डॉट रिफ्रेश करो उसको, रिफ्रेश कर लो, और लॉगिन पे भी हम रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अभी ये चलेगा, ठीक है। अगर लॉग आउट कर दिया तो लॉगिन पे जा रहा है। इफ आई डू लॉगिन, पासवर्ड क्या था, 1234, 1234। इफ आई लॉगिन, इट्स गेटिंग लॉगिन। ये फेल होना चाहिए क्योंकि हमारा बैक है अटका है, पता नहीं क्यों अटका है। इसको इसको सॉल्व करेंगे। Error, HTTP header sent cannot set headers after they send to the client। अच्छा, इसको ना कॉपी करके ये को पूछेंगे इसको क्या है।
वो एरर बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी ना टाइम हो गया, ये बहुत देर से हम लोग कर रहे हैं, तो हमने आज पूरा बेसिक लॉगिन सब देख लिया। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। बाय, ठीक है, कर देंगे। कुछ डाउट है तो पूछ, ये कुछ करने में कुछ प्रॉब्लम एरर्स आ गया तो you can watch this stream. I am recording this. You can watch, or else if not also it's there are is not something you can ask the question. You can in the group. Okay. ठीक है, bye.